sub judice is, suppose if there is already a pending suit in a former court and the parties file a subsequent suit which is related to the same matter issue, then in that case the subsequent suit shall not be proceeded with, though that subsequent court has the jurisdiction to try, but the legislature commands that court that you should not proceed with the proceedings of the subsequent suit, provided all the conditions. What are the conditions? First, same parties. Secondly, same title. Third, matter in issue should be directly and substantially the same. Fourth, the former court must have the jurisdiction. And what does jurisdiction includes? Pecuniary, territorial, and subject matter. On the other hand, in res judicata, what is required from the former court is only the competency, and competency includes what? Subject matter and pecuniary, but not the territorial jurisdiction. And fifth one, that the matter should be heard and finally decided. It will not arise in the case of res judice because none of the decision, neither of the decision has arrived to its logical conclusion. So the fifth ingredient is missing. Otherwise, it will turn out to be a res judicata. If the previous court has heard and finally decided that suit, then the next suit will be barred by res judicata. Since the earlier suit is pending, then only we will examine the scope of res judice. Now, kindly write down next heading or next heading under the res judice only, that entertaining applications in subsequent suit. Entertaining the applications in subsequent suit. Entertaining the applications in subsequent suit. Now the question is, suppose in a subsequent suit, due to res sub judice, the suit has been stayed. Okay. Even then, one of the parties went to this second court and filed an application for temporary injunction. Can it be said that that court, even after the res sub judice has been applied or has been proved, even then, whether the subsequent court has the competency to hear the application for temporary injunction? आपको क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. इसका आंसर देने की कोशिश करें निकिता, that if the subsequent suit has been stayed due to res sub judice, even then one of the parties come to that second court and says, sir, kindly decide my application for temporary injunction. Whether in this case, whether the court is competent enough to decide that application? Yes, sir. Because sir, कल भी हमने केस किया था जिसके अंदर उन्होंने फाइनल वो कर दिया था, तो उसमें भी ये था कि कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टे लगी है, आप मतलब ट्राई कर सकते हो आप सूट को. Very nice, very nice. See, if it would have been you have only crammed the things that I have taught you, you may not be able to answer this question. ठीक है, because prima facie ये लगता है कि अगर res sub judice लग गया उसके बाद तो क्या होगा. But yesterday we discussed that even if the res sub judice is proved, still that court have the jurisdiction to try the suit, and even if it has tried, the decree will be completely valid, but the proceedings will be only irregular. Now the extension of that principle is
theoretically it is possible that even then also the application for temporary injunction can be decided by the second court. But practically what happens कि जब court, when the application will come to a court, court will say please go to the, because now res sub judice has been proved, so the second court is cognizant of the fact that there is an earlier suit which is already pending. So the second court will ask the applicant to approach the first court because it is deciding your entire dispute, so it would be better to go there. But there may be certain cases where it may not be feasible or where it may result into defeats of ends of justice, then in such cases application for temporary injunction can be granted also. For example, suppose there is a case related to possession of building. Okay, you have filed in a first suit, then you again filed in a second suit. The second suit has been stayed due to res sub judice. Now, what happens is one of the parties trying to demolish the entire building, and the first court is outside his state, so he does not have the time to go into that state and appoint a lawyer to go into that state, है ना, and tell the lawyer. So in these cases the application for temporary injunction or other interlocutory applications can be entertained by the second court as well. ठीक है, इस पे लिख लो. Even if subsequent suit, even if subsequent suit has been stayed, even if subsequent suit has been stayed, comma, the subsequent court can still entertain the application for temporary injunction, comma, order 6 rule 17, etc., etc., and decide that application. Full stop. Next line will ignore. The court does not lose the competency to try the suit. The court does not lose the competency to try the suit. So, the extension of this principle is theoretically, the court can decide such applications. Full stop. Next line will लिखना. Per contra, comma, the court will normally ask the parties to approach the court where suit is pending. Next heading लिखना,
non-exhaustive, non-exhaustive. Section 10 is not exhaustive. Section 10 is not exhaustive of principle of res judice. Section 10 is not exhaustive of principle of res judice. Rather, it can be applied under section 151 of the CPC. Rather, it can be applied under section 151 of the CPC. इसका मतलब ये है कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होती सेक्शन 10 की, सो वी आर नॉट एबल टू अप्लाई सेक्शन 10, and if you are not able to apply section 10, we are not able to apply res judice. But sometimes the court, in a very rarest of rare cases, has said that even if the conditions of section 10 are not fulfilled, still in the interest of justice, a very rare cases, the court can invoke section 151 of CPC and still apply the res judice. Okay, ये हो गया. अब नेक्स्ट लिखिए कि नेक्स्ट हेडिंग इज matters in issue not raised in former suit. Matters in issue not raised in former suit. मान लीजिए कि there is a suit one between A and B, and in that suit you did not raise a single issue, but you have raised another issue. There were two issues involved in that suit, but you raised only one issue. In the second suit, you raised both the issues. Now, what we have discussed, that all the issues that res judice applies upon the entire suit. So it is necessary that the issues that were there in the first suit must, the issues that are in second suit must be present in the first suit. Then only the bar of res judice will apply upon the subsequent suit. जब second suit के issues सारे already there in first suit, then only the bar of res judice will apply. ठीक है? Now, in this case, second suit के जो issues हैं वो सेम नहीं है as in the first issue, because first case में तो सिर्फ first suit में तो सिर्फ first एक ही issue raise किया है. Can now we still apply the bar of res judice? If they are merely inconsistent, then sir. Inconsistent, right? But ना इसका आंसर रिया आपकी क्लास में आ गए या अभी चल रहे हैं, मतलब On the way, sir. ऑन द वे. चलो मैं आपको ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना. मैं आपके लिए सेक्शन 10 पढ़ रहा हूँ. वैसे मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी आपको बताने के लिए आप कैसे ढूंढ सकते हैं आंसर, खुद से ढूंढा करें. सेक्शन 10 में क्या लिखा है? No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. निकिता, आप जब तक रिया पहुंचते हैं वहां पे, आप बता दीजिए इतनी सी लाइन पढ़ के क्या इसका आंसर यस होना चाहिए या नो?
सर यस होगा। यस मतलब कि मैटर इन इशू डायरेक्टली सेम नहीं है, बट अगर सब्सटैंशियली सेम है देन वी कैन अप्लाई रेस सब जुडिस। हाँ 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 हाँ, सही। निकिता आपका क्या है? सर ये सब अप्लाई हो सकता है, क्योंकि क्यों? कई बार ऐसा होता है कि उस पर्सन को ही पता नहीं होता है कि हाँ ये भी इशू था, ऐसे नहीं, केसेस में। आप दोनों ये कह रहे हो कि अगर पहले सूट में मैंने एक इशू रेस किया है और दूसरे सूट में दो इश्यूज आ गए, ठीक है, और दूसरे सूट में रेस्ट सब्जुडाइज लग जाएगा, यही कह रहे हो? सर सूट मतलब कि उस पे लग सकता है जो उसने पहले ही रेज कर चुका है वो इशू। चलो ऐसा, इसको ना थोड़ा सा क्लियर करता हूँ पहले आपको। रेस्ट सब्जुडाइज पे हमने डिस्कस किया था, अगर पहले सूट के दो इश्यूज हैं और सब्सिक्वेंट सूट के चार इश्यूज हो गए, तो यहाँ पे हमने वो इंसिडेंटल और कोलैटरल वाला एस्पेक्ट देखा था। मान लो ये चारों के चारों इश्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में रेस्ट सब्जुडाइज नहीं लगेगा, क्योंकि देर आर टू अदर इंडिपेंडेंट इश्यूज विच आर नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर सूट। बट अगर उनको जो दो इश्यूज एक्स्ट्रा ऐड की है, बट दे आर मेयरली इंसिडेंटल इन नेचर, है ना, they are have been just added to avoid the bar of res subjudice, then in that case bar of res subjudice will still apply. अब ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है कि मान लो पहले में तो एक ही है और यहाँ पे अब दो है ना, तो अगर हम उस एग्जांपल पे जाएं उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा इशू है वो भी इम्पोर्टेंट है। बट सिंस इट वाज नेसेसरी टू रेज इन द फॉर्मर सूट, है, क्या अब लगेगा? नहीं, द आंसर वुड बी स्टिल द बार ऑफ res subjudice will apply. क्यों लगेगा? आई टेल यू। यहाँ पे उन्होंने लिखा है द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज कि जो इश्यूज सब्सिक्वेंट सूट में रेज किए हैं, दे वर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फर्स्ट सूट, whether it is raised in first suit or not, it is completely irrelevant. It is a situation of constructive res judicata. कंस्ट्रक्टिव res judicata में क्या होता था, आपने अगर नहीं भी किया और आप कर सकते थे, उस पे res judicata लगेगा and it will be deemed to be heard and finally decided. In this case also, जो इशू आपने रेस नहीं किया, it is still irrelevant for the purposes of res subjudice, because what is essential is कि the matter in issue that has been raised in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the first suit. ठीक है, तो इस पे लिख दीजिए in former suit, in former suit, if there was one issue, if in former suit, if there was an issue which was necessary to decide, but the party did not raise, the party did not raise, and the party did not raise, and it is raised in a subsequent suit, and it is raised in a subsequent suit, and it is raised in the subsequent suit, still the bar of res subjudice will apply,
Still, the bar of res sub judice will apply. Stop. Next time we लिखना because what is relevant is the matter in issue. Because what is relevant is the matter in issue. The matter in issue which was raised in second, which is raised in second suit, must be directly and substantially in issue. Must be directly and substantially in issue. Must be directly and substantially in issue. Must be directly and substantially in issue in first suit. In first suit. Full stop. It is immaterial. It is immaterial whether it was raised in the it is immaterial whether it is raised in the first suit or not. It is immaterial whether it was raised in the first suit or not. ठीक है, ये समझ आ गया. अब लिखिए नेक्स्ट सेटिंग लिखना लिटमस टेस्ट और एसे टेस्ट. ठीक है, लिटमस टेस्ट और एसे टेस्ट लिख के एक लैंडमार्क केस लिखना. नेशनल जो आपका बेयर एक्ट है ना, इसके नीचे जो कमेंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट केस वही है. इट इज अ लैंडमार्क केस ऑफ जुडाइस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस वर्सेस सी परमेश्वर. This judgment was delivered by learned Justice S.H. Kapadia, sir. National Institute of Mental Health and Neurosciences versus C. Parmeshwara Rao. It was delivered by learned Justice S.H. Kapadia, sir. इसके नीचे लिखना. The real test for res sub judice is the real test for res sub judice is the real test for res sub judice is if the subsequent suit is heard and finally decided. If the subsequent suit is heard and finally decided, it will apply. The subsequent suit is heard and finally decided. It will apply as res judicata. It will apply as res judicata upon the earlier pending suit. It will apply as res judicata upon the earlier pending suit. Stop. If the answer is in affirmative, if the answer is in affirmative, res sub judice will apply. Res sub judice will apply upon the subsequent suit. Res sub judice will apply upon the subsequent suit. क्या ये क्लियर है आपको?
कि इसका क्या मतलब है, सिंपल सा समझिए। जो भी सूट आप लोगों ने, जो भी सूट जिस पे आपने रेस सब्जुडाइस लगाना है, बस इतना याद रख लेना, जिस भी सूट पे आपने रेस सब्जुडाइस लगाना है, उसको एक बारी प्रिजम्पशन के तौर पे फाइनली डिसाइड करवा दीजिए, ऐसे ही अपने मन में उसको फाइनल डिसाइड कराने के बाद, अगर वो सूट जो आपने फाइनली डिसाइड करा दिया, मतलब सेकंड सूट, अगर वो रेस जुडिकाटा के तौर पे लगता है फर्स्ट सूट पे, ठीक है, अगर जिस सूट पे आपने रेस सब्जुडाइस लगाना है उसको आप एक प्रिजम्पशन के तौर पे एक बारी थर्ड एंड फाइनली डिसाइड करा के ये एग्जामिन करना कि अगर इस सेकंड सूट को हम सेकंड सूट डिसाइड हो जाता है, क्या इसका डिसीजन रेस जुडिकाटा होगा फर्स्ट सूट पे जो अभी पेंडिंग है। इफ द आंसर इज यस, then bar of res sub judice will apply upon the second suit. Is everything clear to you? Yes, sir. ठीक है, भैया क्लास में पहुंच गए? Yes, sir. ठीक है, चलो आई विल वेट, आप ज्वाइन कर लें क्लास, है ना। तो तब तक if anyone has, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉरेन जजमेंट, ठीक है, बट उससे पहले किसी को रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइस हमारा कंप्लीट हो गया है। रेस सब्जुडाइस में, रेस जुडिकाटा में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 16 टू सेक्शन 25 तक कोई डाउट हो, दे आर फ्री टू आस्क। सर सेक्शन 21 में है। सेक्शन 21 में जी पूछिए। सर थोड़ा सा उसको बता दो कि उसमें है क्या, मुझे वो समझ ही नहीं आया कुछ। सेक्शन 21 नहीं समझ आया? यस सर, थोड़ा सा बस समरी बता दो उसकी कि क्या है उसमें। अच्छा, देखिए निकिता, व्हाट सेक्शन 21 इज कि आपने बार, आपके सूट पे बार ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लग रहा है, ठीक है, यू हैव टू रेज द प्ली दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। Normally you are free to raise this plea if this court does not have the territorial jurisdiction at any stage. There is no bar that you have to ask before the settlement of issues. If you want to raise that plea in the trial court itself, you are free to ask at any stage. Okay? But since we discussed कि जो बार होता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का is not per se of such a nature that makes your decree void, ठीक है, it does not go to the roots of your case. So if you want, मान लो अगर आपने ट्रायल कोर्ट में नहीं रेज की, ठीक है, and now if you want to raise that plea in the appellate court or revisional court, then in what cases the appellate court will entertain your objection that whether the trial court have territorial jurisdiction or not. So section 21 deals with a situation when you want to approach the appellate court or the revisional court for इसके लिए appellate court या revisional court for telling that the trial court did not have the territorial jurisdiction, ठीक है। सो सेक्शन 21 उस सिचुएशंस के साथ डील करता है कि जब आप एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में प्ली रेज करना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, सो काइंडली मेरा ये ऑब्जेक्शन सुना जाए, ठीक है। और इफ उस केसेस में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं सेक्शन 21 में, दे आर बेसिकली टू। फर्स्ट, आपने वो ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट के सामने बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज रेज किया हो,
Secondly, there must be a consequent failure of justice. और थर्ड कंडीशन जो implied है कि the trial court actually in reality does not have the territorial jurisdiction. जब आप ये तीनों कंडीशंस प्रूव कर देंगे एपलेट कोर्ट के सामने या रिविजनल कोर्ट के सामने एज पर सेक्शन 21, then that decree will be set aside under section 21 read with section 99 of the CPC. ठीक है, Yes. अभी कोई डाउट है दोबारा समझा सकता हूँ निकिता, अगर आपको नहीं समझ आया तो इट्स कंप्लीटली फाइन. No, sir. समझ आ गया. Now we will do section 13, that is the foreign judgment. आप में से कोई पढ़ सकता है क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है. इफ एनीवन कैन काइंडली रीड इट आउट. Yes, sir. A foreign judgment shall be conclusive as to any matters thereby directly adjudicated upon between the same parties or between same parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except. बस 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 एक तो कंक्लूसिव को अंडरलाइन कर लीजिए. सेक्शन, ये आपकी आवाज नहीं आ रही. सेक्शन 13, एक तो कंक्लूसिव को अंडरलाइन कर लीजिए और एक डायरेक्टली को. ठीक है, एविडेंस एक्ट किसने पढ़ा है अभी तक? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है. यस सर, सेक्शन 55 तक. सेक्शन 4 में कंक्लूसिव की डेफिनेशन पढ़ी है? यस सर, क्या उसका मतलब क्या है? that they are irrebuttable and it is the foundation on the court to presume that facts to be true. हाँ, अब मान लो कि फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो फिर इसका क्या मतलब होगा? सर जो जजमेंट पास हुई है फॉरेन कोर्ट्स में तो उनको हम कंक्लूसिवली मतलब उनकी अथॉरिटी को जजमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो मानते हैं कि वो एक अथॉरिटी ने डिसाइड की है तो वो ट्रू और वैलिड है. उनको हम जैसे स्टैट्यूट्स को भी ट्रू मानते हैं तो उनको भी हम कंक्लूसिवली मांगे कि उनमें कोई फॉल्ट नहीं है और उनके खिलाफ हम कोई एविडेंस नहीं लाने देंगे जो उनकी जजमेंट को चैलेंज करे. यस सर. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने लिखा है directly adjudicated as to any matter thereby directly adjudicated. अभी सेक्शन 11 और 12 आप दोनों पढ़िए और मुझे बताइए कि दिस वर्ड डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है सेक्शन 11 और 12 में. अगर नहीं लिखा तो what the difference legislature wants to create by using the word directly? इलेवन में यूज्ड है सर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली. इशू से रिलेटेड है, एडजुडिकेटेड से रिलेटेड नहीं है. हाँ मतलब हाँ, तो ये देखिए पहले इसका फिर आपसे डिफरेंस पूछूंगा. आप 11 पढ़िए, 12 पढ़िए और 13 पढ़िए. Then tell me what is the difference or why the legislature has used the expression directly with the expression adjudicated, not the issues.
करें डिस्कस, कुछ आंसर मिला? नो सर, वहाँ पर तो इश्यूज की बात हो रही है, यहाँ तो डायरेक्ट एडजुडिकेशन है, मतलब कोई प्रॉपर अथॉरिटी होगी जिसने डायरेक्टली डिसाइड किया है। हाँ, आप सही जा रहे थे। देखिए क्या होता है, जो रेस्ट जुडाइस और रेस्ट जुडिकाटा है, वहां पे अभी क्लियर है ना आपकी, मेरी आवाज क्लियर है ना? आप समझिए कि रेस्ट जुडाइस और रेस्ट जुडिकाटा में दे एसेंशियली व्हाट आर एग्जामिनिंग कि व्हाट वर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मर सूट, whether it is claimed or not, it is irrelevant for them. If it was substantially and directly an issue in the first suit, then the bar of res sub judice or res judicata is applicable in the second suit. But it is not the case with the foreign judgment. In a foreign judgment, the only matters which were raised and decided, only upon that issues the foreign judgment will be conclusive. जो इश्यूज हम रेस कर सकते थे फॉरेन कोर्ट में और हमने नहीं किए, उन पे फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब समझ आ गया ना कि यहाँ पे रेलेवेंट ये है फॉरेन जजमेंट में कि कौन से इश्यूज डायरेक्टली एडजुडिकेट हुए। ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कि कौन से इश्यूज रेलेवेंट थे। रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा में तो हम ये देखते हैं कोई कौन से इश्यूज एक्चुअली इन्वॉल्व थे, रेस किए हैं नहीं किए वो उसकी दिक्कत थी, हम तो मानेंगे हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो गए। बट इन केस ऑफ फॉरेन जजमेंट हमें ये नहीं मैटर करता कि कौन से इश्यूज इन्वॉल्व थे, हमें मैटर ये करता है कि कौन से इश्यूज एक्चुअली मतलब डायरेक्टली जो एडजुडिकेट हो गए, जो डायरेक्टली एडजुडिकेट हुए हैं उन्हें पे ही फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है। ठीक है, और सर सेक्शन 12 है सेक्शन 12। अच्छा, अभी आपको समझाऊं, एक मिनट, उसको अभी समझा देता हूँ। ये आपका वो कुछ भी नहीं है, इररिलेवेंट सा सेक्शन है। नो सर, अभी आपने ये कहा ना कि 11, 12, 13 पढ़ के डिफरेंस बताना। अच्छा, मैंने ऐसे बोल दिया, सॉरी। मैंने 10 और 11 बोलना चाहता था आपको, रेस सब जुडाइस और, अच्छा सॉरी यार, वो मैं मुझे लगा कि वो 12, 10 और 11 बोल दिया आपको। 10 और 11 बोलना चाहता था क्योंकि रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा में कहीं उस चीज का मेंशन है या नहीं है ना? वो कहीं भी नहीं मेंशन, आप वहाँ पे देखेंगे सिर्फ इश्यूज के साथ लिखा हुआ है। यस सर। तो ना आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। इवन कि कोई जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, दे कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इट इन दैट जजमेंट, है ना? एवरी टाइम न्यू सिचुएशन विल कम फॉर देम, है ना? दैट इज व्हाई द न्यू लॉ कम्स, है ना, once in a while after 20 years after। अब मान लो जो एडवर्स पोजेशन है, नाउ इट इज यूज्ड एज अ स्वॉर्ड, है ना? हमने वो बड़ा इतना फेमस अभी आया था। तो ये चीजें ना इवॉल्व होती रहती है, बट एसेंशियली जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द बेयर एक्टिविटी। तो अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो ऑलवेज स्टिक टू योर बेयर एक्ट्स, उससे जो आपकी रीजनिंग बन रही है, गिव दैट आंसर। ठीक है, मैं आपको इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों को समझा रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिखा है, वहां पे किसके साथ लिखा है, यहाँ पे एडजुडिक, आपने देखो पकड़ना सही शुरू कर दिया कि डायरेक्ट एडजुडिकेशन के साथ लिखा है, वहां पे इश्यूज के साथ लिखा है। बस थोड़ा सा अपने पे विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ एंड सी दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, always believe in yourself. See, unless you believe in yourself, no one is going to believe in you. First, you have to believe that what I am studying is right. I might be wrong on few occasions in my life, even if after becoming a judicial officer, that is not an issue, but I will always believe in myself. Okay? I will continue to decide the cases which I find it right, है ना? अब आपको लॉ नहीं पता, अब आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो हाउ यू विल राइट द आंसर?
you have to believe yourself कि जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैं interpretation कर रही हूँ that is right, and you will find in 95% of cases you are always right. ठीक है. So यहाँ पे डायरेक्ट का हमें मतलब समझ आ गया. अब एक्सेप्ट के बाद पढ़ना, कटिंग में एक्सेप्ट के बाद. Point A, where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. B, where it has not been given on the merits of the case. C, where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable. D, where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. E, where it has been obtained by fraud. F, where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in English. ये एक्सेप्शंस पता है क्यों दी है? ये एक्सेप्शंस उन केसेस को इंडिकेट करती है कि जहां पे फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव. अगर ये चीजें प्रूव हो जाएंगी तो फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव. नाउ काइंडली रीड सेक्शन 14. The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction, unless the contrary appears on a record, but such presumptions may be displaced by proving want of jurisdiction. यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए शेल प्रिज्यूम को और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट. शेल प्रिज्यूम का मतलब बताइए रिया. Rebuttable है sir. Court will not ask for the evidence, but it can be rebutted by the parties. No sir, may में होता है, may presume में शायद वो कॉल कर सकते हैं एविडेंस के लिए, बुला सकते हैं. But sir, shell में the court cannot call the evidence, the parties can rebut it. Otherwise, the court will presume that to be true. इसको ऐसे बोलने की कोशिश करा करें. आप रिया आप सही कह रही हैं. निकिता आपने थोड़ा सा इसको गलत समझा है. आपने कहा ना, आपने क्या बोला था रिया अभी? The court shall presume it to be true unless the party gives contrary evidence to it, and the court shall not ask for the evidence. It is rebutted. हाँ ऐसे मतलब जब हम बोलते हैं ना कोर्ट shall not will not ask for the evidence है ना, आपने ये बोला. ऐसा नहीं हो, मतलब आप सही हैं. वो ना सुनने में ऐसे लगता है यार ये तो दूसरी साइड से बोल रहे हैं. Essentially क्या है, the court is mandated to raise that particular presumption. The court has to raise the presumption, and that presumption is sustained unless it is rebutted by either of the parties. This sounds much more better. आपकी understanding ठीक है, but you have to ultimately write in exams also. So try to understand it that way. The court has to mandatorily raise that presumption, and that presumption will be sustained until it is it has been disproved by either of the parties to the case. ठीक है. निकिता जो आप कह रहे थे मे वाला, मे presume में क्या होता है? The court is not mandatorily asked by the court to raise that presumption. In the first instance, the court is not mandated that he has to raise the presumption. It is only either the court feels that it should be raised or one of the parties prove to such a level that the court feels that okay, we can now raise the presumption. Okay? But in the first instance, in cases of may presume, the court never raise that presumption. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है certified copy of a foreign judgment. अभी आप लोगों के अभी आपके पास एविडेंस एक्ट है निकिता एंड रिया.
उसे खोलिए। निकिता आपके पास पड़ा है आसपास एविडेंस है? सर अभी नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, चलो रिया को तंग करते हैं फिर थोड़ा सा इसमें। रिया आप इंडेक्स खोलिए एविडेंस सेट का। यस सर। इसमें एक प्रोविजन है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट के रिलेटेड। 1 मिनट में आपने वो ढूंढनी है, जैसे वो 3 इडियट्स वाला सीन नहीं होता, हाफ अ मिनट सर आपको दिया जाता है, जल्दी जल्दी। अच्छा ढूंढ भी लिया? शाबाश। शायद पेजेस के हालात, सर 41 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट, 35। नहीं सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन 41 इज एसेंशियली रिलेटेड टू एंटायर जजमेंट्स। कोई भी सर मेरे जजमेंट। ख्याल से ये उसके अंदर है 79 के अंदर, सेक्शन 17 सर्टिफाइड हाँ कॉपी आप आसपास पहुंच गए हैं, 79 के आसपास है। बट 76। इट पर नहीं, वो तो पब्लिक वाले गवर्नमेंट उसकी है। वो है सर 86। हाँ ये किसने बोला 86 अभी? निकिता। निकिता। निकिता राइट, 86 इज द आंसर। अभी इस 86 को खोल के पढ़े रहिए। Presumptions as to certified copy of foreign judicial records. The court may presume that any document, तो may presume लिखा हुआ है. हाँ तभी May presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of India or of Her Majesty's dominions is genuine and accurate if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the central government or in for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of the copies of judicial records. An officer who with respect to any territory or place not forming part of India or Her Majesty's dominions is a political agent, therefore as defined in section 3 of the General Clauses Act, shall for the purposes of this section be deemed to be representative of the central government and for the country comprising that territory and place. इसमें सिंपली ये कहा गया है कि तब हम प्रिजम्पशन रेज करेंगे कि जो फॉरेन जजमेंट है वो सर्टिफाइड कॉपी है ना। इसमें आप समझिए पहले, इसमें तो एक मान लो मैं इंडियन कोर्ट हूँ, आई एम अ जुडिशियल ऑफिसर इन हरियाणा, आई एम पोस्टेड इन पंचकुला, ठीक है। There is a dispute between a husband and wife, and husband has obtained a foreign decree in a foreign court that I can divorce that the marriage is dissolved by the decree of divorce in US. Now that husband comes before me. Always remember he has to first prove that this judgment is a certified copy of a foreign judgment. Right? Either he will bring it in original, or if there is no original, he has to bring the certified copy. How we will presume that it is a certified copy? It is mentioned in section 86. When we will raise the presumption that this particular copy is a certified copy, the conditions are mentioned in section 86. Now, once the conditions and the presumption is raised by the court, yes, it is a certified copy, then we move to section 14 of CPC, where they have written कि the court shall presume. अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये सर्टिफाइड फॉरेन डिग्री है अंडर 86, उसके बाद immediately as per section 14 the court shall presume that it was pronounced by a court of competent jurisdiction. तो समझ आ गया डिफरेंस सेक्शन 14 और 86 का? सेक्शन 86 is basically the first stage कि when you will say अच्छा, when you will raise the presumption okay that this is a certified copy. अब सर्टिफाइड कॉपी है, उसके चक्कर में कौन सी प्रिजम्पशन रेज होती है वो दिया हुआ है सेक्शन 14 में, ठीक है। 40
है 14 और सीपीसी। मैं उसमें ओके सर। अब मान लो कि हमने सर्टिफाइड कॉपी की प्रिजम्पशन रेज कर दी सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम दैट इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction. Why? The answer is in section 14 of CPC. ठीक है, अब समझ आ गया आपको क्या डिफरेंस है दोनों में। अब one of you please kindly read section 44A of the CPC. Execution of decrees passed by courts in reciprocating territory. Where a certified copy of a decree of any of the superior courts of any reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in India as if it had been passed by district court. आप पढ़ते रहो। Together with the certified copy of the decree shall be filed a certificate from such superior court stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall, for the purposes of proceedings under this section, be conclusive proof of the extent of such satisfaction and or अब यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी को अंडरलाइन कर लो और कंक्लूसिव प्रूफ को। ठीक है, सेक्शन क्लॉज 3। The provisions of section 47 shall, as from the filing of the certified copy of the decree, apply to the proceedings of a district court executing a decree under this section, and the district court shall refuse execution of any such decree if it is shown to the satisfaction of the court that the decree falls within any of the exceptions specified in clause A to F of section 13. ये लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, सेक्शन 13 A to F वाली। और थर्ड लाइन है थर्ड क्लॉज की, शैल रिफ्यूज एग्जीक्यूशन। अब एक्सप्लेनेशन 2 पढ़िए। Decree with reference to a superior court means any decree or judgment of such court under which a sum of money is payable, not being a sum payable in respect of taxes or other charges of a like nature, or in respect of a fine or other penalty, but shall in no case include an arbitration award, even if such an award is enforceable as a decree or judgment. तो क्या कह रहे हैं, कौन सी डिक्री एग्जीक्यूट होगी फॉरेन डिक्री इंडिया में जो सिर्फ मनी डिक्री है ना। जब वो मनी डिक्री मान लो मुझे जैसे मेरे पास, हाँ जी। The reason is that कि under Indian Evidence Act हम arbitrators को तो as a court treat ही नहीं करते। नहीं कहाँ चलेगा, इतना डीप मत जाया करो, ये तो फिर आपको दिक्कत देगा। हाँ मतलब डायरेक्ट याद करने के लिए ठीक बात है, बट इतना डीप जाने लग गए ना फिर बहुत कंफ्यूज हो गए लिमिट मतलब। हाँ जी, रिलेट तो कर ही सकते हैं सर, क्योंकि एज ए कोर्ट हम ट्रीट ही नहीं कर रहे आर्बिट्रेटर्स को, तो उनकी कैसे होगा? नहीं ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि हम उसे ट्रीट नहीं करते, उसका रीजन ये है बिकॉज देयर इज अ सेपरेट एनेक्टमेंट बाय द नेम ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन है। वहां पे फॉरेन डिक्रीज को अगर एग्जीक्यूट कराना है वहां पे प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन। हाँ मतलब ऐसे, मतलब मैं आपको चलो एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक मेरा फ्रेंड था, तो फ्रेंड नहीं था, ओरिजिनल बताऊँ या झूठ झूठ से समझा दूँ थोड़ा सा? फिर भी हम समझ जाएंगे सर। समझ आ, ठीक है। तो एक बेसिकली लड़की थी, ठीक है। तो मैं जहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो मैं आई वॉज अ वेरी फोकस्ड वन कि मैं अपना पढ़ता था, मुझे ये भी नहीं पता था कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, कौन लॉ का। तो वो जैसे कईयों की आदत होती है, दे क्लोजली ऑब्जर्व यू है ना, कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है कौन। तो देयर वाज अ गर्ल हु वाज क्लोजली ऑब्जर्विंग मी समटाइम्स, है ना, कि पता नहीं कब कब ऑब्जर्व करती होगी। तो शी केम टू मी कि आई हैव अ डाउट। मैं कह यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं आपकी कैसे डाउट क्लियर कर दूंगा। हालांकि मुझे आता था,
बट मैंने ऐसे बोल दिया, मैं क्या अब पता नहीं कौन सा डाउट ले आएंगे ना ये, तो इससे अच्छा बोल दो कि मुझे तो आता नहीं कुछ। कहते नहीं नहीं बस डिस्कशन करनी है। मैं कहा चलो ठीक है। आप मतलब मैं उस लड़की की इमेजिनेशन सोच के आज भी हंसता होता हूँ, मतलब किस लेवल तक। देयर वाज अ प्रोविजन इन आईपीसी रिलेटेड टू अबॉर्शन, कि जब एक बच्चे को आप वाइल इन द मतलब जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप उसे अबॉर्ट कर देते हो, देन व्हाट विल बी द ऑफेंसेस, वो दिए ना 312, 13, 14। तो वहां पे ना एक्सप्रेशन है हुएवर, और हुएवर आपको हर प्रोविजन में मिलेगा, लिखा ही होता है आईपीसी के, हुएवर कमिट्स दैट ऑफेंस। उसका डाउट पता क्या था कि हुएवर, है ना, ऐसा था सेक्शन की हुएवर कमिट्स द ऑफेंस सो एंड सो। क्या मुझे ये लगता है कि डॉक्टर को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, हस्बैंड को भी इंक्लूड कर लेंगे, वाइफ को भी जिसने अलाउ किया है, और हुएवर में उन हॉस्पिटल स्टाफ को भी इंक्लूड कर लेंगे। मैंने कहा यार ये क्या कह रही है, मतलब सिंपल सा तो दिया हुआ है 312 में, वाइफ कब लायबल होगी और हस्बैंड कब लायबल होगा। डॉक्टर की लायबिलिटी उनके रेलेवेंट सेक्शंस में देखी जाएगी। अगर उसने मिलजुल के किया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लग जाएगा 120 के साथ। मैं कहा मैम आपको ये कहाँ से थॉट्स आते हैं कि whoever को हम इतना वाइडली इंटरप्रेट कर सकते हो। कहते ले हमारी कल क्लास में डिस्कशन हुई है कहीं 1-1.5 घंटा हम 5 दोस्तों ने इसी बात पे डिस्कस किया भी whoever के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैंने उसे डायरेक्ट बोल दिया, मैं कहा मैम, वो हालांकि मेरी एज की थी बट गिविंग हर ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कहा मैम ऐसे आपका कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं कहा अगर आप whoever पे 1.5 घंटा अपनी जिंदगी के खराब कर रहे हैं, वो भी तैयारी के दौरान, 1.5 घंटा में तो आप दो दो चार आप एक्ट पढ़ दोगे, वेर एक्ट मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.5-2 घंटा में ना आप अगर देखना चाहोगे इंडेक्स याद कर लोगे, 2 एक्ट का छोटे छोटे का एसआरए और लिमिटेशन का, और उन्होंने whoever की इंटरप्रिटेशन में भी निकाल दिया। तो उससे मुझे ये सीख मिली थी उस लड़की से, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इवन फॉर अ 4 minute discussion of 5 minutes, that I will never allow my imagination to run like a wild horse. I have to restrict my imagination because see in exams they do not ask you such difficult questions that they demand you that you become jurist. इनिशियली मेरी क्या गलती थी, मैं ना ऐसे सोचता था भाई ये आ गया वो आ गया। जब धीरे धीरे समझ आने लगे ना एग्जाम्स होते कैसे हैं और कितने के लेवल का आता है, तो ये चीजें मतलब इररेलेवेंट लगी मुझे। मैं ऐसे सोचता हूँ आज कभी कभी कि मैं इतना पढ़ा भी क्यों। ऑनेस्टली बताऊं मुझे ये लगता है कि मैं इतनी जजमेंट्स भी मैंने क्यों पढ़ी। ठीक है कि यार मैं तो बिना जजमेंट्स के पेपर क्लियर कर देता। आई एम टेलिंग यू, मतलब आई वुड हैव क्लियर द एग्जाम by God's grace if sometime in the near future I will clear also. Okay, but what I am telling you is कि I have learned the lesson। अब इस लड़की की imagination देखिए, whoever को हॉस्पिटल स्टाफ भी इंक्लूड कर दिया, डॉक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए, है ना, हस्बैंड, वहां सिंपल सेक्शन दिया हुआ है कि भाई वाइफ कब लायबल होगी और हस्बैंड कब लायबल होगा, बस। अब डॉक्टर को भी ले आई, स्टाफ को भी ले आई, अब तो पता नहीं अगर मैं उसके साथ डिस्कशन कर लेता क्या पता वो किसी और को भी ले आती है अंदर कि भाई whoever के अंदर और भी सीट दो, जितने जाते हैं जाने दो। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हम जैसे हमारा एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो उसी के ना इर्द गिर्द रहते रहे। हाँ ऐसे इंटरलिंकिंग करोगे आपको पता कब बेनिफिट मिलेगा, आपको मेंस के एग्जाम्स में दिया एंड निकिता एंड एनीवन एल्स आल्सो, कि जब आप ऐसे सपोज करो बट ना वो रेलिवेंट लगना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जैसे ऑर्डर 6 रूल 17 है, ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 18 के दिया हुआ है देयर इज अ टाइम लिमिट, कि मान लो मैंने आपको टाइम ही नहीं बताया तब तक आपको अलाउ कर दिया आपकी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अच्छा ऑर्डर 6 रूल 17 अब तो मैंने बता दिया ना आपको, चलो ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स होते हैं। मान लो मैंने आपको अलाउ कर दिया आपकी एप्लीकेशन और उसके बाद ये नहीं बताया कब तक आप कर सकते हो अमेंड, ऐसा थोड़ी आप एक साल के बाद अमेंड करोगे। तो वहां पे उस वक्त आपको 14 दिन का टाइम मिलता है एज पर ऑर्डर 6 रूल 18।
हाँ अगर मैंने बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद आप सेक्शन 148 एंड सेक्शन 151 में जा सकते हैं। Am I audible to you? Because my screen has paused and it is not moving right now. Can anyone speak? Yes sir. Am I audible, Nikita? Yes sir. And आपको रिया की स्क्रीन चलती हुई दिख रही है because it has been stopped in my screen. Yes sir, stop हो गई है। तो स्टॉप हो गई है। अच्छा तो अब ऑर्डर 6 रूल 17 में 148 और 151 के साथ आप इंटरलिंक कर सकते हो बिकॉज इट इज रेलेवेंट देयर। बट अगर मैं कहूँ सेक्शन 44 ए को भी 151 के साथ इंटरलिंक करना है ना, तो दैट वुड बी डिजास्टर फॉर यू। तो इंटरलिंकिंग इज अ ब्लेसिंग as well as disaster only if you try to interlink unnecessarily। ठीक है, सो फॉरेन जजमेंट पे बेसिकली ये था जो मैंने आपको बताना था। ठीक है, इस पे डिटेल्ड हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ क्या बताऊं। अच्छा, आर यू फॉलोइंग लाइव लॉ इन फॉरेन जजमेंट्स? Sorry, are you regular updated with the live law? What the judgments honorable Supreme Court or other honorable high courts are giving? No sir, not regular. निकिता आपकी आवाज कम आ रही है। Sir, not regular. नॉट रेगुलर, ठीक है। सो आप लोगों की आज एक छोटी सी असाइनमेंट है। लाइव लॉ में आप जाकर ये सर्च करेंगे कि सेक्स फॉरेन डिक्री को एग्जीक्यूट करने का व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड, और उसका आंसर एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो लाइव लॉ पे पड़ी है। वो आप मुझे कल बताएंगे कि क्या वो जजमेंट में है और जजमेंट का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर executing the foreign decree, what is the period of limitation, whether it is 12 years as in the case of Indian decrees or whether it will be 3 years as per article 137 of the limitation act। ठीक है, सो ये हमारा, ये आपका छोटा सा होमवर्क है आज। ठीक है, सेक्शन 13 14 बस यही है। कल हम इसको डिटेल में करेंगे। आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, तो कल मैं आपको, कल थोड़ी सी क्लास लंबी ले लेंगे एंड वी विल कवर दिस टॉपिक फॉरेन जजमेंट। किसी को डाउट है? एनीवन एल्स इन द क्लास? No sir. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड वी विल मीट टुमारो एंड टेक केयर। Thank you sir. You too.